and what is exactly fit you. Uh, Most of the times, there is very little information you have about career building and career clarity. After you have to decide what is where मुझे same point you're while the webinar is going on, please stop me right there and then and ask the query. However, we will address you all are then we'll be identifying your own identity. I want कि आप हर लोग 93 plus people are here. I wish all of you all get clear answers to at least these three main points by the end of the webinar. So we'll be focusing on that. I want you all to sit with a pen and paper because there are few things that you will need to note down for yourself to later, after the webinar is done, contemplate on whatever we have gone through this session. So the identity is one part. Then we'll be doing future proofing, which is why AI changes the game. And I'll also be presenting a catalog of legal careers that I guess nobody has told you by far. So, and you'll leave with a personal career roadmap. So coming back to the question, who I am, what I do, all of that. So I am an advocate. I practice at the Bombay High Court for 3 years. Bhagya Lakshmi has some doubt. Okay. So I've practiced at the Bombay High Court for 3+ years. Then I shifted to Pune to work completely on the collective counsel, which I thought is necessary today because जितने भी legal edtech platforms है, they are selling crap at a price of gold. 60-70,000 में वैसी चीजें दे रहे हैं, which is मतलब not even worth it. They're giving you fake promises of jobs. I don't know कितने लोगों को actual में job मिलती है. But that is there, and then there is no platform which is focusing on first generation law students. क्योंकि we are not against generational lawyers. The collective counsel has lot many generational lawyers who are our partners, whose firms are our partners, who are our mentors, and all of that. But however, this is a absolute fact that generational lawyers have a little bit of edge over us as फर्स्ट जनरेशन लॉ स्टूडेंट्स बिकॉज हमारे पास वो एक हक का फोन कॉल नहीं है जो जनरेशनल लॉ स्टूडेंट या फिर लॉयर्स के पास है. उनको अगर कोई डाउट आता है वो अपने घर में मामा मम्मी पापा चाचा चाची किसी से भी पूछ सकते हैं कि ये डाउट है मैं क्या करूं, दिल गेट अ क्विक आंसर एंड अ रिलायबल वन, जो हमें एज अ फर्स्ट जनरेशन लॉ स्टूडेंट इज वेरी रेयर टू फाइंड.
तो हमने सोचा कि कम्युनिटी बनाते हैं जिससे फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स की मदद करिए, पीयर टू पीयर नेटवर्किंग हो। बहुत सारे फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स जो एस्टेब्लिश हुए हैं अपने करियर्स में एंड दे आर अहेड, वो अगर हमें गाइड, लॉ स्टूडेंट्स को गाइड करे, तो हो सकता है कि जो गलतियां लॉ स्टूडेंट्स अभी करने वाले हो वो ना करे, बिकॉज द जर्नी इज ऑलरेडी लिव्ड बाय समबडी एल्स. Apart from that, I have my own NGO named as Europe Forum India, wherein we do work on menstrual hygiene. We distribute free sanitary napkins to around 1,000 women per month. Then we do have a project called as Umeed, which is basically for the students from the slum. जिनके slum पे हम लोग जाके, there are these brilliant youngsters who are willing to educate. So they go to these slums and they teach these kids. So the aim is not to get them a degree, but basically अगर उनको आज अगर ये समझ आ जाए कि मेरे को पढ़ना है और पढ़ने से मैं अपनी फैमिली, अपनी पूरी लाइफ की ट्रैजेक्टरी चेंज कर सकता हूँ या सकती हूँ, दैट इज व्हाट वी वांट टू इनकलकेट इन दिस लिटिल माइंड्स. Apart from that, I've also worked with UNICEF as a board advisor in the Indian Youth Board. Before that, I've been working as a Young People's Action Team member representing Maharashtra. I've received a Presidency Award for Scouting, a Rashtrapati Puraskar. Before that, I've received a Rajya Puraskar by the hands of Governor of Maharashtra. So this is all about me. We'll quickly shift back to the topic that we have, because there's going to be a little long session, because I want all of you all to benefit from every bit of it. Perfect. So the first section that we'll be looking at here is, what did you tell people you wanted to become? If one or two of you all could just raise your hands and answer to this. What is it, जब आपको कोई पूछता है कि आपने लॉ लिया है तो आप क्या करना चाहते हो, what is it that you tell them? Yes. Still figuring out corporate law, litigator. Okay. Got it. So if these are your answers, judge, corporate lawyer, litigator, IS officer, I completely get it, क्योंकि आप लोगों ने इतना ही careers को explore किया, इतने ही careers देखे हुए हैं. So I completely get it. But however, if you have raised hand, if you have said one of these, what if I told you none of these may define your career anymore? इसलिए नहीं क्योंकि ये careers disappear हो गए, of course they are there, but because none of them is a life sentence anymore. ये चीज आप हर रोज नहीं कर सकते हो. There are various and multiple reasons to that. Why survival becomes difficult in one of these fields, why there are IAS officers resigning, why there are judges who are resigning and becoming litigators, why there are litigators who are switching from litigation to corporate, and why there are corporate people leaving their job, starting something of their own, may even be a little small cafe. There are multiple reasons to every career path that is there, but most of it is because they are not able to keep them updated. Also, these career trajectory paths are not sustainable enough with the growing inflation that is there, with the growing needs of the people that are there. So these careers are not something that are the only options that you have. Section 2, the world has already changed. Now, why and how, we'll be getting back to that. So these are 3 snapshots about our country itself. And this is what happens in every country, basically. So in 1950s, it was a time wherein government job बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है. अभी भी लोगों को लगती है कि government job बहुत stable है, बहुत secure है, all of that. Nobody looks at the cons that are there with that, because बहुत सारी perks है to the person, of course, but also to the family that is around it. However, there are cons जो सिर्फ उस इंसान को face करने पड़ते हैं. Just if you become a judge, you cannot live your life, you cannot be an extrovert person, you'll have to give up all of that, you'll have to follow strict protocol that is there, lot many things. In 1990, what happened when the liberalization took place, MNCs, consulting, IT, ये सारे लोग पिक्चर में आ गए. तो उसके बाद प्रोफेशनल प्रेस्टीज जो है वो शिफ्ट हो गया. अब सिर्फ गवर्नमेंट जॉब वो स्टैम्प एक प्रेस्टीज नहीं बना. पैसे, मनी,
मॉनिटरी रिम्यूनरेशन वाज समथिंग दैट प्लेड अ बिगर रोल. ठीक है, तो फिर लोग इन सब में स्विच होने लगे. नाउ आफ्टर 2025 व्हाट इज हैपनिंग इज बहुत सारे रोल्स आने के बाद देयर आर पीपल स्विचिंग अप वेरी फास्ट एंड द ओनली ऑप्शन टू ग्रो इज स्विच. अगर आप लोगों ने आईटी में लोगों को देखा होगा तो व्हाट दे डू इज दिस स्विच. अगर वो लोग बहुत जल्दी जल्दी स्विच करते हैं तभी उनकी सैलरीज बढ़ती है, उनके पैकेजेस बढ़ते हैं, उनकी सीटीसी बढ़ता है. सो ऑल ऑफ दिस हैपेंस, है ना. तो नाउ द करियर ट्रैजेक्टरी एवरीथिंग इज चेंज्ड. अब जैसे कि पहले करियर लैडर होता था, अभी वो नहीं है. अब देयर इज अ करियर क्लाइंबिंग वॉल. अब इसमें डिफरेंस क्या है? ओल्ड लैडर में क्या होता था कि स्कूल करो, कॉलेज करो, डिग्री लो, एक जॉब में लग जाओ, प्रमोशन लो, प्रमोशन लो, प्रमोशन, रिटायरमेंट लो, दैट्स इट. द न्यू लीगल इकोसिस्टम और एनी करियर इकोसिस्टम में क्या है? इट इज अ क्लाइंबिंग वॉल. व्हाट डू यू मीन बाय क्लाइंबिंग वॉल? There is no single ladder that you will have to follow. Any of this you do, but you keep doing it. So you learn, you build, you fail, you teach, you start again, then you build again, then you lead, then you experiment, then you invest, then you create, then you teach. If you fail, you learn again, you switch again. All of this is very fast and it's happening every day. Okay? Are you all on the same page? Are you all getting? Yes, sir. Perfect. Yes, sir. सो अभी ये जो क्लाइंबिंग वॉल है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब पहले जैसे नहीं रहे करियर्स. बिकॉज लॉट ऑफ करियर्स अगर आप देखो तो उसमें यू विल हैव टू हैव मोर देन वन स्किल सेट. ठीक है. सो यस सोनाली, यस सलोनी, यू हैव समथिंग टू आस्क. ओके. तो द करियर्स आर नाउ बिल्ट फ्रॉम मेनी रोल्स. अब जैसे कि पहले क्या होता था कि जॉब हॉपिंग करो, एक जगह दूसरी जॉब खोल रहा है तो यार ये क्या है इंसान, ये बस इधर से उधर करते रहता है. नाउ दैट इज द ट्रेंड, दैट इज द सिक्योरिटी. ठीक है. जॉब हॉपिंग इज नॉट अ रेड फ्लैग एनीमोर. ठीक है, बाय डिफॉल्ट. रितेश, यू हैव अ क्वेश्चन टू आस्क. Yes, sir. Very good evening. This generation is a very advanced, and I'm schooling time. My English teacher telling the student, you study your graduation with improving your skills and your talent, improving your talent, your skills. You focus with your graduation, your skills. So yeah, I think. Right. Today everything is changing. It's no more what has been taught in school. सो एंड डेफिनेटली स्किल सेट इज समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो अगर पहले आप देखो जैसे कि जेन एक्स के करियर्स में आप देखो तो 2.4 इयर्स का एक एवरेज टेन्योर था पर रोल पे उसको रहना है. ठीक है. इफ इज देयर फॉर 2.4 इयर्स इन अ कंपनी, उसके बाद अगर वो स्विच करे तो उसकी सैलरी बढ़ती थी. उसके पहले अगर वो करता था तो पीपल वुड कॉल हिम अ ड्रॉप आउट. ठीक है. अभी पर आपके लिए फॉर द जेनजी एवरेज टेन्योर जब तक आप पास होंगे ये इससे भी कम होगा. दिस 1.4 years that you see is currently what is going on. 1.4 years में you switch to different roles. You switch to let's say from a junior role to a senior role, then you switch to a leadership role, then you switch to a business role, then you switch to a communication role. ये सारी चीजें अगर आप करो then you can reach height of a company. ठीक है. तो ये टाइम ड्यूरेशन जो है तो 2.4 years से 1.4 years तक आ गया. एंड बाय द टाइम you all pass out भी और भी it is going to become less. ठीक है. So the question is no longer what will I be, it's what will I become again and again. Do you get this question? So मैं क्या बनूं, आपको भी एक बार नहीं बनना, आपको बनते रहना है, बनते रहना है, बनते रहना है. ठीक है. यू विल हैव टू मेक डेवलपमेंट्स टू योर स्किल सेट्स. अब जैसे कि अगर आप देखो, आई गिव यू वेरी सिंपल एग्जांपल ऑफ आईटी इंडस्ट्री. व्हाई आई कीप ऑन गिविंग आईटी इंडस्ट्री एग्जांपल्स इज बिकॉज इट इज क्वाइट अहेड देन आवर लीगल इंडस्ट्री. लीगल इंडस्ट्री में वी आर स्टिल स्टक विद going to the court, going to a boardroom, that's all. जैसे कि आईटी में you switch from various departments. जैसे कि a person who is entered after doing BSc, BSc IT या फिर CS BTech करके अगर वो कोडिंग में लगा है तो then he'll switch to another role. It might be sales, it might be business, and then he'll switch to leadership role. ठीक है. I have included few examples. Yeah, definitely, Rimanshu. I'll be sharing the PPT and also other material that is there. Don't worry about that. So, I'll be covering कि कैसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने career zigzagging करके various roles पे जाके they have built a amazing careers. So, coming to the later part, अब AI का जो आपको डर था, so we'll be getting to that a little bit. Give me a moment.
या तो अगर हम देखें तो देर आर 92 मिलियन ग्लोबल रोल्स जो पोटेंशियली डिस्प्लेस्ड है एआई की वजह से, एआई ऑटोमेशन की वजह से वो डिस्प्लेस्ड है. व्हाट डज डिस्प्लेस मीन? इट डज नॉट मीन कि वो रोल्स चले गए. इट इज डिस्प्लेस. डिस्प्लेस मतलब क्या? पहले जहां पे एक बंदा खुद ड्राफ्ट करता था. Anuradha has a problem with the PPT. Is everybody else able to see the PPT? Okay. Okay, perfect. So, Anuradha, don't worry. I'll be sharing the PPT in the group. Or just give me a moment. I'll share the PPT right away so that you all don't have a problem. जिनको दिख नहीं रहा, you all can just web it through. Just a moment. No worries, Anuradha. I'm sharing it in the group. You can access it from there. Yeah, I've shared the PPT here. You all can just go through it. Okay. तो 92 मिलियन जॉब रोल्स जो है डिस्प्लेस. डिस्प्लेस मतलब क्या? कि अगर पहले वो इंसान उस चीज को करता था तो अभी दूसरा इंसान जो एआई की मदद से वो काम कर रहे विल बी गेटिंग दैट जॉब. ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेस्ड. ठीक है, इट इज नॉट रिप्लेस, इट इज डिस्प्लेस. प्लीज अंडरस्टैंड द डिफरेंस. ठीक है, पर वो कितने रोल है डिस्प्लेस? 92 मिलियन. ठीक है, अब न्यू रोल्स कितने क्रिएट हुए बिकॉज ऑफ एआई कमिंग इनटू पिक्चर? 170 मिलियन. ठीक है, दैट इज अ बिगर पिक्चर. सो इट इज नेवर गोइंग टू हैपन कि ह्यूमंस को एआई ने रिप्लेस कर दिया. इट इज जस्ट गोइंग टू बी ह्यूमंस बेटर एट एआई who will be replacing humans who are not good at AI. It's as simple as that. Simran will be taking this question at the Q&A in the end. So upskilling needed कितना है? ग्लोबल वर्कफोर्स को जितने लोग अभी काम कर रहे हैं उसमें से कितने लोगों को अपने स्किल्स को अपस्किल करने की जरूरत है? इट इज 59%, मोर देन द मेजॉरिटी 50% मार्क, है ना? So this is where AI comes into the picture. It's not going to eat up your roles. It's going to just make you develop an upskill. So we'll be moving on quickly to the section 3, which is not everyone climbs one ladder. Some people build several ladders and lean them against each other. So we'll be taking examples of these people who are there. Now, there are 8 people whose case study I've included here for you all to understand. Satya Nadella, if you all know, Indra Nooyi, Reed Hastings, he's the whole and soul of the Netflix, जिस पे आप लोग वेब सीरीज देखते हो. Naval Ravikant, who's invested into Uber, Twitter. Zia Modi, if you all know, she's a partner at a top law firm. Falias Nariman, if you all know, he's a great man who declined judiciary and continued his practice. Nikhil Kamath, of course, all of you all know. Kunal Shah, of course. So we'll be going to all of their profiles very quickly and just check how they have zigzagged. So Satya Nadella started and completed his education into electronics, MSCS, computer engineering. Then he completed his MBA, which is a completely different field from electronics or CS because it is a tech field and MBA is more of a management leadership field. He started his first role as an engineer, is precisely, to be precise, a junior engineer. Then he did an unexpected transition, joined Microsoft, then moved to Windows, then servers and tools, and binge search, which are all unrelated. ठीक है, अगर आप आईटी में देखो अनरिलेटेड सेक्टर्स है. जैसे कि हमारे लॉ में एडीआर से लेके लिटिगेशन में शिफ्ट किया, लिटिगेशन से कॉर्पोरेट में शिफ्ट किया, कॉर्पोरेट में पॉलिसी में स्विच किया, ऑल लाइक दैट. सो ही हैज डन दैट. सो व्हाट की लेसन डू वी गेट फ्रॉम Satya Nadella is range across very different divisions, not depth in one, but the case that he could lead the whole company. ठीक है. So are you all aware of the phrase that is there, jack of all trades, master of none? So it is still a half phrase. आगे का it is like still the better than one. So yeah. Perfect. Then we have Indra Nui. She is into global consumer goods. She completed her education from IIM and then later in sorry.
she started her first role as a product manager at Johnson and Johnson. ठीक है, you all know what a product manager is, कि जो product पे काम करता है basically, that is product management. ठीक है, so current role, she is a CEO at a PepsiCo. ठीक है, now CEO is a leadership role. It is nothing to do with her education of year that she has done or her entry role that she started with. Product manager, and she has become a CEO, which is a leadership role. Okay, so she started from a consulting strategy background, later went into unconventional route into consumer goods giant, and now she is handling the PepsiCo's entire portfolio. Then we have Reed Hastings. Now Reed Hastings completed his education. This is a very interesting profile. He completed his education into math. Later on, he started his first role software engineer. Yes, Nita, that's the complete one. So he started first on a job, software engineer at Adaptive Corporation. He did an unexpected transition where he founded Pure Software, sold it, and then later on he started Netflix. Now Netflix initially was meant to be a DVD by mail company. What is a DVD by mail company? कि आपको मेल पे आप सब्सक्राइब करोगे और आपको मेल पे उस मूवी का उस चीज का आप खरीदोगे तो आपको मेल पे आ जाएगी. ठीक है, जैसे आप टेलीग्राम पे डाउनलोड करते हो वैसे अगर आप नेटफ्लिक्स पे उनको परचेस करो तो आपके मेल पे उसकी रिकॉर्डिंग मतलब पूरी फिल्म आपके पास आ जाएगी. लेटर ही हिमसेल्फ टोल्ड दिस होल मॉडल दैट ही हैड बिल्ट. ठीक है, अब उसने पूरा एक नेटफ्लिक्स बना दिया था. ही हैड टू ब्रेक ऑल ऑफ इट एंड build a new model completely. This is something that you'll have to do with yourself, your skill sets and your careers that you're doing. ठीक है, एट अ सर्टेन पॉइंट आप एंटर करो एक करियर में, आपका अभी एम है कि आपको कॉर्पोरेट में जाना है, आप कॉर्पोरेट में एंटर करोगे. एट अ सर्टेन पॉइंट यू विल फील कि यार बस हो गया कॉर्पोरेट, अब इसमें मुझे कुछ अलग करना है. यू विल हैव टू स्टॉप, यू विल हैव टू रीथिंक, यू विल हैव टू रीबिल्ड एंड देन shift your career trajectory to that. Now, why this get difficult for most of the people in corporate or in people who are into, let's say, a secure job, is क्योंकि समझो मैं corporate में I am at a pay scale where I get 50,000 per month. ठीक है, अब अगर मेरी 50,000 सैलरी है, now this is a mindset I'm talking about majority of the people. I'm not pointing कि सबका ऐसे ही होता है, but this is the majority of people think because we are humans. तो 50,000 अगर मेरी सैलरी है तो I won't live a life that I was living while I was in law school, right? 50,000 अगर मेरी है तो मैं बस से ट्रैवल तो नहीं करूंगा. I'll travel by metro, I'll travel by cab, or let's say buy myself a scooty. ठीक है, I won't use the same old phone. I would buy a new phone because there are people around me, my seniors and people around with me, my colleagues who are have raised their lifestyle. So intentionally or unintentionally, I'll upgrade my lifestyle a little bit. अब ये सारे अपग्रेड्स किस में आ रहे हैं, 50,000 में तो आ नहीं सकते. सो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम डूइंग ईएमआईज. ठीक है, अब ईएमआईज करने के बाद माय 50,000 हैज अ प्लान्ड आउटगोइंग. हर महीने मेरे 50,000 कहाँ जाएंगे इसका पूरा एक स्ट्रक्चर प्लान्ड है. एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम आई कम एंड आई थिंक कि अब मुझे जॉब नहीं करनी, आई एम गोइंग टू डू समथिंग ऑफ माई सेल्फ, और आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ कॉर्पोरेट प्रैक्टिस ऑफ माई सेल्फ, आई एम गोइंग टू बिल्ड अ फर्म ऑफ माई ओन, समथिंग लाइक दैट. The main question that arises is कि आपका जो 50,000 का 50,000 का कैलकुलेशन था उसका क्या होगा, because वो तो बंद नहीं होगा, it will still be there, but your 50,000 will be gone. So whenever you make your career decisions, you will have to put all your mind, all your aspirations into one place and think very carefully कि आपके लिए अगला right step कौन सा है. Yes, risk appetite is a very important factor कि आप वो risk ले सकते हो क्या. ठीक है, दैट इज ऑफ कोर्स देयर, बट स्टिल यू हैव टू पुट योर माइंडफुलनेस कि मुझे लाइफ में बाय द टाइम आई एज टू 50 व्हाट एंड हाउ एम आई सपोज टू बी सीन. और मतलब सीन माने दुनिया को नहीं, खुद को हाउ डू आई वांट टू सी माई सेल्फ, व्हाट विल बी आई डू एट द एज ऑफ 50. उस हिसाब से यू हैव टू प्लान योर करियर ट्रैजेक्टरी अभी से. ठीक है, एट टाइम्स देयर विल बी चीजें जो आप करना चाहो बट वो ना हो, मे बी इट इज फॉर द गुड. ठीक है, तो believe but plan. ठीक है, so this is about Reed Hastings. Then we have Naval Ravikar, who initially did his CS in economics, that got into investment and started his own angel list. Then we have Zia Modi. Now Zia Modi was someone who had a very good career with McKinsey. She had a very good career. ठीक है, अभी तक वो McKinsey, but she did not do that. She quit. She came back to India and started her own firm, the AZB that we know of today. Now, this was her risk appetite. This is something that she did
considering her risk appetite कि मैं जाके ये कर सकती हूँ. She also saw that there is a huge gap for legit and huge firms in corporate governance and other stuff in India, जिसमें she saw a gap and she built her career. Okay, and not just her career of many people who are currently working with EZB. Then we have Falias Nariman sir. How many of you all know him by name? Any of you all had a chance to see him in person before he passed away? Okay. So he studied from GLC, Bombay. Okay, Ron, great. So now this is something different that he did from the others. His trajectory, his career zigzagging was not accepting what came along, but denying what was not right for him. He turned down a high court judgeship and resigned as an ASG in 1975 protest, choosing independence over prestige. Now, this was his moral ethics. This was something that he couldn't compromise with, and he did that. And today, all of us know him as a legend. So at times ये भी करना पड़ सकता है कि आपको जो ऑफर्स आ रहे हैं, हर ऑफर आप तो ले नहीं सकते. And I'll give you a quick example about a little example of my own life. So before I was getting into collective counsel and I had left my practice at the Bombay High Court, there were a lot of jobs that I was being offered as co-founder, as the same CEO position that I'm currently doing here, with a great amount of salary. And that was a time where my parents wanted me to get into a stable job because it was long time I was practicing on my own, because I realized in my 4th and 5th year itself कि अगर सही senior नहीं मिलता है तो बहुत ज़्यादा वक्त waste जा सकता है. So that was a time wherein I was like कि ठीक है ले लेते हैं job ये वो, but then there was something inside me that did not agree, because first thing I wanted to do something of my own, right? From the age where I realized that I have a purpose in life, and that is to bring change in the system. I tried various ways to do that, did not work out. And here today, when I found the Collective Counsel and built it, we are around an organization of more than 10,000 young professionals and litigators and legal experts and law students, which came across time, of course, but that was my decision to agree to my models, because sare edtech, they would be of course behind the money, and I thought कि legal education या फिर education in general is something that needs to have a purpose behind it. ऐसे ही something like a vegetable that you just go and sell. It needs to have a strong purpose. So that is where my career trajectory changed probably. Then we all know about Nikhil Kamath. He though dropped out, a legend of course. He though dropped out of the college कोई degree नहीं, but today he's the co-founder of Zerodha and through Beacon and venture investor and many more. Kunal Shah, of course, recently has become the global CEO of WhatsApp Meta. He's also founder of Thread. Very bold. All these 8 people that I've explained, they have a pattern behind. ठीक है, पहला तो none of them planned the exact path in advance. The info that they had, जो मैं स्टार्टिंग में बोला कि उस वक्त आपको जितनी इंफॉर्मेशन है उस हिसाब से और आपके कॉन्शियस से आपको क्या लगता है कि व्हाट इज द राइट स्टेप. एक चीज समझ लो, कुछ भी कितनी भी लगा लो, कितनी भी क्लासेस लगा लो, कितने भी लोगों के सामने छुपा लो, कुछ भी कर लो, इन दी हर चीज जो आप करते हो विल बॉइल डाउन टू ओनली 2 ways, राइट और रॉन्ग. इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू राइट. ठीक है, कि that is what will take you to a longer journey and will help you in a longer run. So this is something that they, then every unrelated experience that they had turned out to be an exact ingredient success needed. ठीक है, आपको लग सकता है कि यार ये तो अनरिलेटेड है, ये मैं कर क्या करूं. आपके कॉलेज होंगे, वेबिनार्स होते होंगे, आप लोगों का बहुत फिक्स हो कि मेरे को कॉर्पोरेट करना है, मैं लिटिगेशन का सेमिनार वेबिनार करके क्या करूं. No information, no knowledge that you take will ever go to waste. Somehow it will turn to your help when you need it the most. How many of you all have seen Harry Potter?
Have you all seen Harry Potter? Yes, sir. Okay, perfect. So in Harry Potter, there's a beautiful line where Dumbledore says, uh, "Happiness can be found in the darkest of times if one knows to turn on the light." Right. So that is something that you need. आप फीडबैक फॉर्म के लिए ही सेशन ज्वाइन कर दीजिए because every webinar that happens, I see your first message popping up asking for the feedback form. You'll get it, the feedback form, and if you're doing it for the certificate, you'll be of course getting it because you're very active in the groups and everything. But don't worry, the session is much more than the feedback form and certificate today. So then there are several of their most important career decisions were things they said no to than saying yes. So that is something that they happen. And the zigzag wasn't a detour from the career for all eight. The zigzag was the career. उन्होंने जो zigzagging की अपने career में, that is what led them to a successful career. Yeah, we'll moving towards section 4, which is why zigzag careers win in today's era. ठीक है. So different inputs, better decisions. एक तो चीज, अगर आप law कर रहे हो, you need to have a second domain with you. Palak and Nisant is your ID. You guys have any questions? If not, if you all could please lower your hands. If not, the host, please just lower their hands. Yeah, I'll tell you what second domain means. A second domain can be anything. Anything that you absolutely love doing. कुछ भी हो सकता है. You love sports, get into law plus sports, you get into sports law. You love shows, you love entertainment. If you are the one जो Netflix में बोल के पूछ सकता है यार ये तो गलत दिखा दिया इन्होंने, ये कैसे दिखा सकते हैं. जैसे कि ब्राउन करके there is a series that has come. उसमें the lead is shown rolling something and then smoking it. It's not weed actually. It's herbal cigarettes. But again, it is not right to show it in a public domain. So if something like that interests you, so that is your second domain. And then you can get into entertainment law. I'll also be helping you build a stack. A stack is basically जैसे कि ये law हो गया आपका foundation, आपका second domain and your skill set. That makes your stack. अब आपका stack देख के आपको देखना है कि कौन से job description में, कौन से JD में, कौन से job role में मेरा stack fit बैठ रहा है. And then you'll get into a career that is meant for you. ठीक है. So but a law in a second domain क्यों important है? Because if you have this strong combination of law and something else which is your absolute love, तो that is a career nobody else can build. ठीक है. दूसरी एक बहुत बड़ी important चीज ये है while choosing your career path is क्या आपको वो काम करने में मजा आ रहा है? Are you loving that job? क्योंकि देखो, अगर आप उस चीज में हो and you're just there for the other factors जैसे कि वर्क लाइफ बैलेंस हो गया, सैलरी हो गई, पेमेंट हो गया, बट यू डू नॉट हैव अ फुल हार्ट इन इट, तो आप कभी 100% नहीं कर पाओगे, राइट? कभी भी 100% नहीं कर पाओगे. बट उस फील्ड में ऐसा कोई तो होगा जिसका हार्ट भी वही है और बाकी सारे फैक्टर्स भी हैं, तो वो तो 100% कर लेगा. आप 99 97 तक कर लोगे, है ना? बट देयर विल बी ऑलवेज समबडी बेटर देन यू. पर आप अगर ऐसे करियर पाथ चूज करते हो जिसमें यू हैव योर 100% हार्ट, तो बाकी सारी चीजें ये अक्वायर्ड स्किल सेट्स है, वो तो आप सीख लोगे, है ना? वेबिनार्स कर लो, कोर्सेज ले लो, सारी चीजें कर लो. Yes, of course, Anuruddha, you can consider writing as a second domain, and law and writing takes you to great heights. There is also example stack that is there. Further, we'll be getting to that. So, ये सारी चीजें, that is why you need a second domain. ठीक है? So combinations, yes, teaching is also an absolute amazing second domain. Tirthankar, HR, all of it, yes. Which living combination will we have? Simran, I taking a question. Please note it down. We'll be taking it in the end. Okay. So Bhagilakshmi's second domain is something that you love. So for example, law plus psychology. Psychology समझो मुझे पसंद है, तो law plus psychology. I can get into legal design. Yes, neither yes, martial arts can be second domain, but then you have the career options that open for you are sports law. You can become an advisor to that, or you can get into compliance of health. You can get into compliance of how martial arts expanding. There are various
institutes that actually teach martial arts in various geographical regions. So they require a very much compliance to if they are allowed to teach it there, if the students are allowed to learn it. There's a lot of that is going on with sports currently. So here are some of the combinations that are currently built. Sana, if you could just go on mute. The host, if you could please put Sana on mute. Okay. So law plus psychology is one combination that is already being built. It is currently working in the legal design sector very, very, very much. Then we have law plus AI, of course. You can get into legal AI consultant. You can get into legal tech. You can get into various assisted roles that are there. Then there is law plus business. You can get into startup counsel. You can get into startup advisory. Then there is law plus media. आप legal content creator भी बन सकते हो. That is an emerging field. Though I personally don't think it will be a long-term career. But yes, of course, legal creators are earning a lot, very much a lot. We ourselves when we are getting into collaborations with these creators, इतने पैसे मांग लेते कि I also think ये सब छोड़ के लॉकडाउन में कंटेंट क्रिएशन ही कर लेना चाहिए था. Because they like charge very much, which is of course great because they have gained that much of audience on the social media platforms, of course. So advanced legal stacks, कुछ ये legal stacks है, which is law plus finance. You can get into VC councils. Yes, Ronak, perfect timing for the question. Law and finance, wherein you can get into VC councils. Every startup that is raising money, every startup or every company that is getting into venture capitalism, that is getting into VCs, angel investors need a stringent contracts, need very stringent agreements. Now a person, अब देखो, अब जैसे कि law plus finance है ना, तो if I have done law in corporate law में मैंने किया है, मैंने अपना मास्टर्स किया है corporate law commercial law में, but मेरा finance का कोई background है नहीं, ठीक है. So if I go to a firm या फिर go to a company जिनके constant investments होती रहती है, जिनके constant mergers होते रहते हैं, जिनके constant let's say वेंचर कैपिटलिस्ट के साथ उनकी अग्रीमेंट्स होते रहते हैं, तो इफ आई गो देयर, अब वो इंसान एक सीएस हायर करेगा या फिर एक सीएफओ हायर करेगा या फिर लेट्स से एक सीएफएम हायर करेगा, ही हायर अ सीएस समबडी लाइक दैट एंड देन ही विल हायर मी, ठीक है. सो ही इज पेइंग फॉर टू पीपल डूइंग टू डिफरेंट जॉब, ऑल बट इंटरलिंक्ड, ठीक है. तो instead, if I am into finance, if I am the one who's doing CFA, if I am who's done CS, if I am who's done CA, or if I am even just have a degree in finance, graduation in finance, and I have done a law, so दो लोगों का काम मैं एक साथ कर रहा हूँ. That becomes your second domain. So finance is the second domain, law is my first domain. It can be vice versa as well. So उस हिसाब से if I get into VC council, उस कंपनी को, उस इंसान को हेल्प हो रही है. वो जहाँ पे 50,000 दे रहा था, वो मुझे 80,000 दे रहा है, उसके 20,000 रुपए बच रहे. प्लस ही इज टॉकिंग टू ओनली वन सिंगल पर्सन, और वो इंसान फाइनेंस भी समझ रहा है, लॉ भी समझ रहा है, एंड देन ही इज क्रिएटिंग द अग्रीमेंट्स. वरना अगर मैं सिर्फ लॉ में हूं तो हर चीज, इक्विटी कितनी होगी, ये कितना होगा, पेड अप कैपिटल शेयर क्या होता है, ये क्या होता है, ये आई हैव टू आस्क समबडी एल्स जो फाइनेंस का बंदा है. उससे अच्छा अगर मेरा ही फाइनेंस का है, मैं ही फाइनेंस का बैकग्राउंड है, मेरा लॉ का भी बैकग्राउंड है, तो आई प्ले अ ग्रेटर रोल. रितेश प्लीज गो अहेड. सर एक्चुअली आई आस्किंग क्वेश्चन, एक्चुअली फैशन लॉ में बहुत चीज़ों को लेके लॉ होते हैं, जैसे आज के टाइम पे एआई को भी कनेक्ट किया जा रहा है लॉ से, तो चीज़ें हैं बहुत एडवांस हो रही है जनरेशन धीरे धीरे. हर फील्ड को लॉ से जोड़ा जा रहा है कहीं ना कहीं. स्पोर्ट्स को लेके भी लॉ, इवेंट्स के भी लॉ. एक्चुअली सर आई एम कंप्लीट इन डिप्लोमा इवेंट्स मैनेजमेंट. जैसे एक्चुअली मेरे कॉलेज में दिल्ली हाई कोर्ट्स के एडवोकेट्स आ चुके हैं, उन्होंने सारा लॉ बताया है कि आप अगर कोई इवेंट्स कर रहे हैं तो किस लॉ को आपको फॉलो करना चाहिए, किस उसके लिए एक्टिविटी के लिए आपको क्या लाइसेंस चाहिए होगा. अगर आप अल्कोहल का यूज़ करें इवेंट में तो आपको लीगल लाइसेंस लेना पड़ेगा. हर उसके लिए अपने अपने लाइसेंस होते हैं, तो वो चीज़ है. Right, definitely. So that is how today is evolving. So Sonal, you had a question. Let's go to that. Yeah. So your question is, wouldn't fashion law would be a part of IPR? No. Why? Yes, of course, IP is one part of fashion law, not the other way around. क्योंकि फैशन लॉ में क्या होता है, इफ देयर इज अ डिजाइन दैट आई मेक, ठीक है. अब फॉर एग्जांपल लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ उर्फी, ठीक है. तो उर्फी अब कुछ भी पहनती है,
ठीक है, तो इट इज हर फैशन दो, ठीक है, बट जहां पे वो जा रही है वहां पे वो एक्सेप्टेंस है क्या उन कपड़ों का? इज इट inclining towards vulgarity? Is it inclining towards let's say criticism of some culture? अगर ऐसा कुछ हो रहा है क्या? जैसे कि अगर मैं समझो क्रोकोडाइल लेदर के मैं शूज पहन के गया, ठीक है, हमारे देश में तो चल जाता है, ठीक है, इफ आई गो टू अ कंट्री जहाँ पे ये सब अलाउड नहीं है, ठीक है, तो वहां पे अगर मैं जाऊं तो वहां पे तो मेरे पे फाइन लग जाएगा. सो दिस इज अ कंप्लायंस पार्ट. एवरी लॉ दैट कम्स एक्सेप्ट फॉर द लिटिगेशन में ये चीज होती है, बट वी डू नॉट कॉल इट compliance and due diligence. We call it investigation and other stuff. But every other aspect, every other domain of law is basically goes to two or three things. First is due diligence. What is a due diligence? Let's consider the example of fashion law. अगर मेरे को एक कोई फैशन है, मेरे को अपना मेरा शूज का ब्रांड है, मेरे को अगर अपना शूज का ब्रांड I want to take it to a country. So first I have to check कि जिस जमीन पे मेरी फैक्ट्री, मेरे आउटलेट्स वहां पे बन रहे हैं, क्या वो जमीन लीगली सारे परमिशन के साथ मेरे पास आ सकती है? क्या मुझे इस प्रोडक्शन का वहां पे परमिशन मिल सकती है? Does this fashion comply with the policies of that country or the state or the locality that I am doing? क्या वो objectifiable होगा? ये सारी चीजों का ड्यू डिलिजेंस करना पड़ेगा, देखनी पड़ेंगी चीजें कि है कि नहीं. देन यू हैव टू डू द कंप्लायंस, मतलब एक्चुअल परमिशंस निकालना, एक्चुअल सारा डॉक्यूमेंटेशन करना, एंड देन लेटर ऑन कम्स जहां पे आप रेगुलेट करो. रेगुलेट माने क्या? फिर आपको बस देखना है कि एवरीथिंग इज गोइंग स्मूथली और वहां पे कोई लीगल कंडीशन अराइज नहीं हो रही है जिसकी वजह से कोई लीगल कैलामिटी ट्रिगर हो जाए, ठीक है. सो ये तीन चीजें होती है. अब बेसिकली जो कॉर्पोरेट में लोग होते हैं, दे डू नॉट गो टू द कोर्ट. अब जैसे कि समझो मैंने ये सारी फैक्ट्री मेरी डाल दी, ठीक है, मैंने कपड़े वपड़े बना ले, शूज बना ले, मैंने शूज पे लिखा कि आई हेट नमो, ठीक है, आई हेट बीजेपी मैंने लिख दिया, ठीक है. अब बीजेपी वाले मेरे पीछे पड़ गए. अब आई वुडंट गो कोर्ट सेइंग कि यार ऐसे ऐसे है ये, आई एम फाइटिंग द कोर्ट. नो नो, यू विल हेल्प अ स्टैंडिंग काउंसिल. व्हाट इज अ स्टैंडिंग काउंसिल? दिस इज अनदर wonderful career that is there. Standing counsels are basically those who appear, उनके खुद के क्लाइंट्स नहीं होते, उनको लॉयर्स या फिर कंपनीज अपने केसेस देते हैं जस्ट टू आर्ग्यू, एंड दे आर पेड जस्ट टू आर्ग्यू, ठीक है. तो स्टैंडिंग काउंसिल्स जाते हैं वहां पे. अब जैसे मेरी कंपनी में से हुआ, मैंने स्टैंडिंग काउंसिल को presenting my shoe company in the court. He'll be doing all of that work. That is not my part of job. ठीक है. What is my part of job? ये करना. Apart from that, how IP comes into picture कि फैशन लॉ मैंने सारी लिए तो उसका IP लेना. और फिर अगर कोई कंपनी जो फैशन से रिलेटेड, फैशन इंडस्ट्री है, उसमें अगर इन हाउस टीम है तो दे बेसिकली अपने खुद के कॉपीराइट्स, पेटेंट्स, आईपीस को खुद फाइल करती है. बट देयर इज अ ह्यूज प्रॉब्लम में आईपी कि आप अगर जाके फाइल ट्रेडमार्क आपको वो मिल नहीं जाएगा. ऑल्सो देयर इज नो डेडलाइन टाइमलाइन दैट इज गिवन बाय द अथॉरिटी कि आपको कब तक ये मिलेगा, ठीक है. तो फिर वहां पे एजेंट्स कम इनटू पिक्चर, जहाँ पे ये लोग होते हैं जो टेक लिटिल बिट ऑफ मनी एंड देन दे गेट योर आईपी कॉपीराइट. सो ये सारा काम इनके बीच कोलैबोरेट करना, कोऑर्डिनेट करना और ये सारी चीजें करवा लेना इज योर वर्क एज अ फैशन लॉयर, ठीक है. सर एक बार यही हर इंडस्ट्री. यस सर उर्फी जावेद को अरेस्ट भी किया था जब वो लेडीज पुलिसमैन एक्चुअली देखा था शी इज गोइंग टू स्टारबक्स एंड बाहर से आ गया था. हाँ जी, हाँ जी, राइट. So that is one thing. Then we have law plus data. Privacy consultant आप हो सकते हो. Data और law will go hand in hand for long periods of time. I heard someone talking about corporate strategists. Is it different from a corporate lawyer, and what is in-house legal counsel? So very quickly, corporate strategists are yes different than a corporate lawyer. Corporate lawyer looks into due diligence, compliance, and regulation. Corporate strategists are someone who build in strategies for the growth of the company. They can be lawyers, they can be non-legal domain, but mostly they're lawyers because legal compliance देखना पड़ता है. वरना अगेन सेम चीज कि CS किया हुआ है तो उस इंसान से जाके पूछो, all of that. So अगर कोई लीडरशिप वाला रोल है तो उसको चीजें पूछनी पड़ेंगी. In-house counsel is somewhere wherein you work in the department inside a company. आप उस कंपनी का सारा लीगल काम देख रहे हो from end to end, from compliance, due diligence and regulation, all of it, ठीक है. सो वैसे ही लॉ एंड डेटा है. डेटा का कभी भी खत्म नहीं होगा. हमारे पास डीपीटीपी है पर अभी तक उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा. तो जब होगा उसके बाद लॉट ऑफ करियर्स विल बी ओपनिंग, बट स्टिल देयर आर वेरियस कंपनीज जिनको बाहर के फॉरेन में दे आर एक्सपांडिंग
एंड वहां पे तो कंप्लायंस है, वहां पे GDPR भी है, तो दे विल हैव टू स्टे कंप्लायंट टू दैट। तो उसके लिए दे आर लुकिंग फॉर प्राइवेसी कंसल्टेंट, जो आप उनको बता सको कि डेटा का कैसे स्टोर होना चाहिए, कहाँ स्टोर होना चाहिए, किस चीजों की परमिशन लगती है। जैसे कि वेबसाइट पे भी जब जाते हो आई अग्री या फिर एक्सेप्ट ऑल कुकीज, ये सारी जो चीजें होती है उसमें पॉलिसी होती है। टेक सम डे, टेक लिटिल बिट, अगर आपको डाटा में और प्राइवेसी कंसल्टेंसी में इंटरेस्ट है, सो टेक वन डे, किसी भी वेबसाइट पे जाओ, हमारे सीसी की वेबसाइट पे द कलेक्टिव काउंसिल के तब भी चलेगा, और एनी अदर वेबसाइट दैट यू वांट, हर वहां पे यू विल हैव दिस प्राइवेसी टर्म्स ऑफ यूज, ये सारी चीजें। तो ये सारी चीजें वही प्राइवेसी कंसल्टेंट बनाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि डेटा कैसे स्टोर होने वाला है, क्या कंप्लेंट है क्या नहीं है। देन देयर इज अ ह्यूज मार्केट फॉर लॉ प्लस हेल्थ केयर। हेल्थ केयर माने क्या, आप जैसे कि मेरे जैसा बंदा है, अब हेल्थ केयर माने आपको MBBS नहीं करना, वरना आप 5 इयर्स का लॉ करोगे फिर 6 इयर्स का MBA करोगे, MBBS करोगे, वैसे नहीं है। हेल्थ केयर माने इवन इफ यू हैव टेकन PCMB या फिर PCB इन योर 12th, इट कुड स्टिल हेल्प यू, क्योंकि आपको बेसिक बायोलॉजी पता है, बेसिक चीजें पता है, यू कैन गेट इनटू हेल्थ केयर अगर आपका इंटरेस्ट, या फिर आपके घर वाले कोई हेल्थ केयर में है। दैट इज अ कम्प्लीटली ओपन डोमेन। बहुत सारे हॉस्पिटल्स को लीगल कंप्लायंस होते हैं, बहुत सारे जो उनको करने पड़ते हैं मेडिकल एथिक्स के हिसाब से। लॉट ऑफ disputes and ongoing issues that are there regarding healthcare. Yes. Euthanasia Actually, is one of it. yes, sir. Actually, my cousin brother he working B Pharma in medicine industry. So उन्हें भी actually सर जब बुलाते हैं कंपनी, उनके जो सीनियर बुलाते हैं कि आपको इस लोकेशन पे जाना है, इस हॉस्पिटल में जाना है, Right, right. डिस्कस डॉक्टर्स के साथ, तो Yes. So all of that is there. Then there is law and policy, Sir, which is a tough career to break in, but great one. Rahul, what's your question? Is someone at sir, of his own name? Yes. sir, am I audible? Uh, yeah. Please go ahead. Sir, like you are telling about law and AI, so like many companies, like I am like coming to know, like from now onwards or from a year or two, like they will be hiring this data protection officer. And sir, like with me is I am pursuing my masters right now. So and it's in corporate and commercial law. So like, how may I like take this course? Like since I have the specialization in law, corporate and commercial law. So like, may I go into this field like without taking the thing I need to say? So course on Ronan, data protection. Yes. Hello. yeah, yeah. Yes, yeah. So data protection still does not satisfy the conditions for law. It has no compliance for AI, because data protection उस वक्त उन्होंने अब कितने भी amendment कर ली, we'll need a separate legislation for AI. However, it is definitely a good career to opt for. A lot of opportunities are also currently open, and is that a answer to your question? If not, please let me know. Okay, so Rahul will be considering your question. If someone has business of his own name after doing LLB, can he register himself as an advocate too? Is it advisable to practice or not practice having business in another domain? What is your best advice on this scenario? No, you will have to surrender your license to practice. Your sanat, you will have to surrender it if you're starting your own business. So you can do either of it. So, sir, in actually in my case, like one of my friends who has done completed the LLB and is still having a business, but he's not a practicing advocate. So, Mhm. is it can it be done through this way? Yeah, Like he yeah, registered yeah. himself, but You he's can not practicing stop. advocate. Right, you cannot practice then. If you have your own Yeah. business, you cannot practice. The only business with the sanad or the license that you can do is the business of law. Now, business of law means you will need to have a law firm. Okay, any business that is out of the legal domain, you cannot practice. You cannot do it while you're practicing in the court. So in that case, he can register himself, but he is not advisable to practice. I mean, he's Right, not right, authority to yeah, right, right. cannot practice on behalf of anyone. Exactly. Okay, okay. He can definitely practice chup chup ke, but that is not actually a practice. That is, of Yes, course. yes, yes. Yeah, I have seen actually. I met a couple of people who is living in my location, and they are practicing, and they are having separate business in another domain. No, not in the legal side, but they Right, do have. So right, this is right. a very practical question I wanted to ask you. So, Yeah, as per legal aspect, it is not recommended it is from not your side, recommended. or but somehow it can be done. Chup Can be chup done. ke,
It can be done. चोरी You can चोरी put वाले them हैं। किसी और के नाम पे आप लगाओ और अपने वाइफ हाँ के हाँ हाँ पापा के नाम पे और आप चलाओ. That is fair. या Legally तो fair या है, but ठीक है. thank you so much and really grateful to you, thank you. So we'll be getting to section 5. Now this is something that will be going ahead with. Give me a moment. I have some problem with my laptop. Okay. So this is a personality experiment that we'll be doing. So this is a self-reflection tool, not a verdict on who you are. Okay. So this is something I want you all to read very carefully. I'll read it out loud for you. This is a self-reflection framework, not a measure of personality. We are borrowing loosely from the MBTI, that is Myers-Briggs type indicator tradition, as a language for reflection. Nobody's legal career is determined by 4 letters, of course. Use this to start a conversation with yourself, not to close one. Okay, so quick reflection. When a group of projects starts, I naturally want to. What is it that you do? A or B? You can put it in the chat box. When a group project starts, what is it that you naturally want to do? Do you map out the plan and logic first, or you get everyone aligned and motivated? Sonal, so I get why you have a G in your ENJP. So ENJP. Okay, perfect. Now this is just for your reflection. I hope you all get it. Also, these questions, answers that you are writing it, put it down on the notepad of the paper that you're carrying it. It will help you later on when I share the workbook of self-reflection. आपको उसको complete करने के बाद you get a clear answer to this. Then we have this question 3, which is when I disagree with someone, I usually do what? Lay out facts and argue the point, or look for the common ground first. And then we have 4th question. My ideal Sunday involves what? A structured plan I can tick off, or wherever the day happens to take me. Most of them are 8. Great. So there are 4 broad tendencies that we get out of the questions that you have answered. So I am from the MBTI. I've drawn it down to a little narrower perspectives than the MBTI. So here I put you all into 4 different personalities. One is analyst, that is logic first, systems minded, drawn to precision and strategy. Then we have diplomats, that is people first, values driven, drawn to fairness and persuasion. Then we have sentinels, which are people who think the structure first, reliable, drawn to the process and predictability. And then we have explorers, that is action first, adaptive to the changes that are happening, drawn to variety and hands-on problems. So out of these 4, what do you think who you all are? Just put it in the chat box. How many of you are analysts? How many of you are diplomats? How many of you are sentinels? Okay, Sonal is an analyst, Ronak is an analyst. Nobody is explorers. Shruti diplomat, Dhruv diplomat, Pratiti analyst. Okay, analyst diplomat. Shalvan is an explorer. Achal diplomat, Bhairavi diplomat, Sabita diplomat. Okay. Perfect. That's enough of answers for me to understand that you all have got the whole things. Now these are just tendencies. These are not your destinies. ठीक है? So analysts माने आपके लिए precision fields कौन से हो सकती है? IP, tax, arbitration, corporate structuring. Diplomat अगर आपका personality type है तो आपके लिए क्या persuasive जो fields है वो हो सकती है, जैसे कि litigation, advocacy या फिर ADR या फिर client counseling. Sentinels जो है उनके लिए fields क्या हो सकती है? Compliance, legal ops, regulatory governance. एक्सप्लोरर जो है आपके लिए स्टार्टअप काउंसिल, लीगल टेक, एंटरप्रेन्योरशिप,
एक्सप्लोरर्स के लिए आई वुड सजेस्ट लीगल टेक करंटली इज अ वेरी बूमिंग इंडस्ट्री, वेरी बूमिंग इंडस्ट्री। आपको वर्क फ्रॉम होम मिलता है, आपको अच्छी खासी सैलरी मिलती है, यू कैन एक्सप्लोर समथिंग एल्स व्हाइल यू आर डूइंग इट, व्हाइल यू हैव जॉब सिक्योरिटी, ऑल ऑफ दैट। ठीक है, देन विल मूव टू section 6, which is discovering your strengths. Now there are 6 questions that I want you all to answer. What is it that you do better than most people around you? We'll just take 2 answers here on call. Rest of you all can just pin down your answers. Please pin down because it's going to help you later. So yes, Ria, it's quite similar to that. So a lot of people have actually developed their understanding about how people can be put into different sectors of personality depending on various factors that they have taken. So जैसे कि Myers और Briggs, उन्होंने their mom and daughter, so उन्होंने जो ये अपनी theory बनाई थी, उनमें they included extroversy, introversy, judgment and precision, ये सारी चीजें उन्होंने include की. So everybody has taken the different factors, but all of that at a bigger picture, if you see, is quite interlinked and same. Okay, so we'll be taking first 4 people who raise their hands to answer these questions. Sorry, first 6 people to answer the 6 questions that we have on the screen. So for the first question, strengths, what is it that you do better than most people around you? Anybody who's willing to answer the question on call? I could see. Sir, may I say? Okay, if you all could just raise your hands and then go, it will be better. Or Ronak? Yes, sir. Yes. So I think my strength lies on the fact that I am quite calculative in various things, and like I like to arrange this logistic stuff. I mean to say those arrangement things. Like I think I am better. Perfect. Better at it. Got your answer. So that is your strength, of course. Later on, we'll move to interests. Any other who would answer to this question? What do you get curious about without being asked to? What is it that sparks your curiosity? It could be anything. Dhruv's strength is determination to progress. Interest, anybody like to answer? Ritesh, you raise your hand. Okay. Shagun, yes, please go ahead. Yes, sir. Good evening. My Good evening. interest delves around geopolitics, learning the current affairs, it's going on, how India deals with other countries. Recently, India has signed certain deals with Indonesia, Australia. Learning that about. Perfect. This helps Shagun, me so have you progress. thought that bureaucracy, diplomacy, and governance could be your calling? Have you thought of it? Yes, sir. I am adapting these types of interest where I can grow in future. Currently, I am also pursuing my IPR and I have done internship at under litigation. I am knowing Okay. my interest, which sector it's developing. Perfect. Shagun, there is an organization called as UWAH, YUWAH, which works with UNICEF directly. It is called UWAH Generation Unlimited. They provide various openings to brilliant young minds who are interested into geopolitics like you to draft policies. I was part of it once and I have drafted and given my contribution into the NEP that has been Yes, sir. come into picture recently. So definitely search around a little bit and you have a better opportunities, because what I think is litigation and IP would hold you down if you want to get into geopolitics, because Yes. these fields are quite tempting at the beginning and ask a lot of your time. So maybe if geopolitics and public policy is something that you want to get into, there are various easy accessible points you can get into. बहुत बार ये होता है कि बच्चे उसमें जाते नहीं है ये सोच के कि जब तक मैं कुछ बन नहीं जाती तब तक मैं वो काम नहीं कर सकती. It is not like that. The world is changing very fast. There are various fellowships and various organizations that take in young brilliant minds based on just a simple 2 stages interview. One is where you fill a long form and they ask everything about you, about your personality, तुम कैसे हो, क्या करते हो, what do you like, why are you applying, all of that, and then they cross question you on the interview and see if you're just determined. उनको ये नहीं चाहिए कि आपको कितना पता है जियोपॉलिटिक्स के बारे में, अगर आपको वो चाइना भेजे तो क्या आप डेलीगेशन कर सकते हो. It is not that. It is just कि क्या आप जिस
चीज में geopolitics में जाना चाहते हो, is it truly your calling and your purpose, वो identify करके they give you various opportunities. Generation Unlimited is one platform, and there are various others. Sir, I would definitely. is that Pune-based Yuva Forum? I just saw your page on LinkedIn. You have also mentioned that it is in Pune, Yuva Forum. Yes, yes, yes. We have units in Pune, Mumbai, and many other states and cities. But then we do ground level social impact work, which is quite. Yes, sir, I can contribute in that also. I have connected with her NPO. It's an women-led empowerment. Also, we have raises fund for women. Also, we also have distributed menstrual cup to women Perfect, in Shagun. Pune. So I can That's volunteer also, sir. perfect. That's really great. So that is something we'll get on to separately. But I Yes, sir. really I like. have also wrote two of the newsletter. One is of domestic violence Okay, and dowry debt recently. perfect. That's really great. Yes, sir. Okay. So moving ahead, we'll be speaking and talking. Sir, sir, sorry to interrupt, sir. Please go ahead. Could you please tell the name of the organization like you told us? I'll put it in the chat. I'll put it in the chat. Yeah. Thank you. So then we have values. Anybody to answer the question of values? Like, what do you refuse to compromise on, even under pressure? Yes, Rimanshu. Self-respect, of course, Anirudh. That is something. Hello, sir. Am I audible? Yes, you are. Please go ahead. Good evening, sir. Sir, can you repeat the name of the organization which you were telling? It's Yuva Generation Unlimited. I'll be sharing the link to that. You all can also go to UNICEF jobs portal directly and search for internship. You'll have to select a filter of internship there, and then you can see various internships that are there in India and outside India. Most of them are hybrid as well, and most of them actually pay you well and give you remuneration to travel to different countries. So that is something that is really amazing that they do. Then we have skills. So values, we have got lot many answers. Work-life balance. We have got morals, ethics, definitely self-respect. Then we come to skills. What have you actually built, practiced, or gotten good at? It can be communication. It can be talking to people. It can be networking. It can be confidence. It can be anything. Anybody who's willing to answer this just in one word, very quick? Arguments, communication. Okay, great. Then we have energy. What work? Somebody has raised a hand. Ritesh, you want to say something? Yes, sir. I will say I choosing diplomats. I was always applying United Nations. Uh, but don't responding me. This is very long processing in the United Nation. But I will starting my personal organization, my NGO, and I work at my nearby hometown, and I in the future I open the all over India as a state level or NGOs and Great, Ritesh. That is a great plan. Also, UN में जाना is of course difficult, but you can get into other UN agencies, जैसे कि UNICEF हो गया. UNICEF encourages a lot of youngsters to come in. Perfect. Shruti, please go ahead. So to answer the skills question, I think public communication and active listening is what I've like gotten from the Perfect. experience. Active listening is something I was very bad at, and I have developed it only recently. But it is definitely a great skill to actually listen to people before you think. Earlier, my trait was that I had built up all my arguments in my mind. सामने वाला कुछ भी बोले, मैं उसको side listen करके जो मुझे बोलना था वही बोलता था. So, but then active listening is definitely a skill all of you all need to work on. It helps to get a clearer perspective कि सामने वाले को क्या सुनना है, and it really helps you a lot. Coming to energy, I want somebody to answer this question very quick. What work leaves you energized rather than drained? Researching. Researching. Who was that? Okay, perfect. So that is a very great skill set, which rarely people find energetic.
So if you find research energetic, you have a lot of scope. ठीक है, ये मत समझो, एक चीज आप समझ लो, बहुत सारे बच्चे अभी फिलहाल दे डोंट गिव अ क्रैप, ठीक है, इन सारी चीजों के बारे में, डोंट गिव अ क्रैप अबाउट द करियर। बहुत सारे आपके दोस्त होंगे, कलीग्स होंगे, डोंट गिव अ क्रैप अबाउट लर्निंग, बहुत सारे। तो अभी जितना कॉम्पिटिटिव दुनिया है, उतने ही कम लोग स्किल स्केट के साथ है, ठीक है। इस और ऐसे टाइम पे इफ यू हैव अ स्ट्रेंथ एट अ स्किल सेट विच इज वेरी रेयर, जैसे कि रिसर्च हो गया, मोस्ट ऑफ द पीपल इफ यू सी एंड टॉक टू, इधर वो ऊपर ऊपर के लिए बोलेंगे कि हाँ रिसर्च मैं कर लूंगा, कर लूंगी ये वो, बट इन डेप्थ में उनको कुछ नहीं आता। उनको आप एक रिसर्च आर्टिकल लिखने बोल दो, दे फंबल एवरीवेयर। ऐसे सेक्टर में व्हेन यू स्टेट दैट यू हैव योर इंटरेस्ट, यू हैव अ लॉट मेनी स्कोप, यू कैन गेट इनटू, आपके लिए मतलब सारे दरवाजे खुले। बट अगेन यू हैव टू अडॉप्ट टू द AI डेवलपमेंट दैट इज हैपनिंग। रिसर्च आप भले ही उसमें बहुत ज्यादा अच्छे हो, a person who's researching with an AI will always be a step ahead of you, even if he's not a good researcher, because AI is a good researcher, ठीक है। yes it hallucinates, बहुत बार ये होता है कि AI hallucinate करता है, ये कुछ भी बना के चीजें देता है, ये सारी चीजें, बट उसके लिए एक तो दो चीजें, एक तो सेपरेट AI सॉफ्टवेयर्स है जो सिर्फ रिसर्च के लिए बने, बट देन दे आर वेरी एक्सपेंसिव एंड आई वुडंट एनकरेज यू टू यूज एनी ऑफ देम। ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आपको नॉर्मल चैट जीपीटी, क्लॉड, जेमिनाई नहीं दे सकता, और इन तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन बना के आपको चीज नहीं मिल सकती, ऐसे कुछ भी नहीं है। फ्री AI प्लेटफॉर्म्स आर फार मच बेटर देन द वंस व्हिच आर डेडिकेटेड एंड पेड। ये सारा एक बहुत बड़ा शैम है, ये बहुत बड़ा एक मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश आज दुनिया में चल रही है कि अरे यार हम लोग ने हार्वी बना लिया, हार्वी जैसे है, हार्वी इज टू गुड, ठीक है। हार्वी, क्योंकि हार्वी जिस देश में बनाए वो देश बहुत आगे है हमसे। हमारे कंट्री में जो लीगल टेक आ रहे हैं कि यार हम लोग इस इतने आगे जाएंगे, ये करेंगे, हार्वी की हम पे सारी रिसर्च करते हैं, दे डू नथिंग दैट चैट जीपीटी, क्लॉड, जेमिनाई कुड डू। इट इज जस्ट टू क्रिएट अ मोनोपोली कि ये चीजें आप खरीदो तो आपको ये मिलेगा। इट इज not worth paying, trust me, it is not worth paying. Now how do you use free open AI platforms without getting them to hallucinate or giving you fake case laws? That is called as prompt engineering. That is something you will have to learn, ठीक है। एक AI को कैसे बात करनी है, उसको क्या prompt देना है, something that you will have to learn, ठीक है। तो I'm not doing sales here, I'm not doing marketing here, but because there is this something that we believe in ki I and we at the collective council do not personally want people to fill in money to various legal platforms that are there, 2000 रुपए महीने का देते रहो। Instead we have built a course which is a very cheap cost, which is led by Arundhati Thakur ma'am, and she teaches you prompt engineering, जिसको एक बार आप सीख लोगे तो आप ये सारे फ्री प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हैं टू गेट जेन्युइन रिसर्च आउटपुट्स विदाउट हेलुसिनेशन, ठीक है। तो स्किल्स पे डेवलप करो, टूल्स पे पैसे खर्च करना है सेकेंडरी, पहले अपने स्किल्स पे पैसे लगाओ, स्किल्स डेवलप करो, दैट इज समथिंग आई वुड सजेस्ट। तो ये सारे चीजों में आपके पैसे बच जाएंगे, but you need to develop your skill set, especially when it comes to AI, because it is something that is growing rapidly, and if you're not learning, somebody else is definitely, ठीक है। So then there is purpose, whose life gets better because of the work you do. This is something that is very important. अब ये सवाल is something that made me start the collective council. आज लिटिगेशन में बच्चे जा रहे हैं 2-3 साल प्रैक्टिस करने के बाद भी they are getting a pay around 200 rupees per day, ठीक है। I'm staying in Pune. The maid that comes to my house just for mopping the floor takes around 300 to 400 rupees per day. While lawyers, professional degree 5 साल की करने के बाद getting 200 rupees, which is a sad reality. So that is my purpose कि इनकी लाइफ में easy बना सकते हो if I get them skilled and connected to real careers जिसमें बहुत सारे gaps है, बहुत ज्यादा vacancies हैं, पर उसके लिए उनके skills build नहीं है. So this is my purpose. Like that you will find your purpose, and that is very important while deciding your career. Okay, then we have the Ikigai overlap. I guess many of you all have might have read the book. So it is basically क्या कि what do you love, आपको क्या पसंद है, what are you good at, आप किस चीज में अच्छे हो, what the world needs, दुनिया को चाहिए क्या,
एंड व्हाट यू कैन बी पेड फॉर, किस चीज के लिए आप पे कर सकते हो, इसके बीच का इंटरसेक्शन जो है ये पॉइंट, ये दिस इज योर इकिगाई, दिस इज समथिंग दैट यू आर मेंट टू डू, दिस इज योर रीजन ऑफ बीइंग, दिस इज समथिंग आपको परस्यू करना चाहिए. ठीक है. सेक्शन 7, careers nobody told you about. We're going to discuss 23 careers that nobody talked about. There are 6 categories and one big idea. So the courtroom track, the deal table, the frontier, the business of law, cultural and creative law, voice and venture. कोर्टरूम टैक में कौन सी करियर्स है? लिटिगेशन, एक्चुअल रो क्या है? आर्ग्यूइंग क्वेश्चंस बिफोर द लॉ, रिसर्च भी सारी चीजें आती है इसमें. द डिमांड इज स्टेडी. एआई इंपैक्ट है क्या? हाँ है, रिसर्च असिस्टेड है, रिसर्च में एआई यूज हो रहा है. एडीआर, एक्चुअल रोल क्या है? मीडिएशन, आउटसाइड कोर्ट, आर्बिट्रेशन हो गया, मीडिएशन हो गया, नेगोशिएशन हो गया. डिमांड राइजिंग है, बहुत तेजी से बढ़ रही है. एआई का इंपैक्ट क्या है? लो है, बिकॉज देयर इज ह्यूमन टू ह्यूमन नेगोशिएशन, ह्यूमन टू ह्यूमन मीडिएशन. देन देयर इज इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन, ग्लोबल कमर्शियल डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व किया जाता है. डिमांड हाई है, ग्लोबली बहुत ज्यादा हाई है. एआई इंपैक्ट कंपैरेटिवली इज वेरी लो, क्योंकि अगेन ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन. आईपी लॉ, एक्चुअल रूल क्या है? पेटेंट, ट्रेडमार्क्स फाइल करना, टू प्रोटेक्ट द ट्रेडमार्क्स, टू प्रोटेक्ट द पेटेंट, ऑल ऑफ दैट. डिमांड यस राइजिंग वेरी फास्ट, क्योंकि जितने तेजी से बिजनेसेस बढ़ रहे हैं, कंटेंट क्रिएटर्स बढ़ रहे हैं, इंडस्ट्रीज बढ़ रही है, एवरीबडी नीड्स अ पेटेंट एंड अ ट्रेडमार्क. एआई इंपैक्ट रिसर्च असिस्टेड, अगेन रिसर्च के लिए यूज होता है. देन देयर इज द डील टेबल. अब डील टेबल के अंदर कौन से आते हैं करियर पाथ्स? कॉर्पोरेट लॉ, इसमें एक्चुअल रोल क्या होता है? स्ट्रक्चरिंग एमएनए डील्स को स्ट्रक्चर करना, कंप्लायंस देखना, ड्यू डिलिजेंस देखना, ऑल ऑफ इट. डिमांड स्टेडी है, जैसे लिटिगेशन की है. एआई इंपैक्ट यस, ड्राफ्टिंग असिस्टेड बहुत ज्यादा है. स्टार्टअप काउंसिल, अगेन एम्बेडेड सपोर्ट फॉर फाउंडर्स, ये आपका रोल होगा. डिमांड राइजिंग वेरी फास्ट, अगेन एआई इंपैक्ट ड्राफ्टिंग असिस्टेड है. वेंचर कैपिटल, जिसमें डिलीजेंस के रूल्स है, बेसिकली इनसाइड फंड्स, वेरियस वीसीज, एंजल इन्वेस्टर्स के साथ काम कर सकते हो. डिमांड बहुत ज्यादा राइजिंग है, बिकॉज़ देयर आर लॉट ऑफ स्टार्टअप्स कमिंग इन इंडिया, इट्स बिकमिंग अ स्टार्टअप हब. तो ये सारी चीजें भी है. एआई इंपैक्ट इसमें अगेन रिसर्च असिस्टेड है. इन हाउस काउंसिल, इसमें बहुत ज्यादा डिमांड है, ग्रोइंग डिमांड है, बिकॉज कोई भी नहीं चाहता कि हम अपना लीगल काम किसी और फॉर्म को सोर्स आउट करें. Mostly abhi every company is trying to have an in-house counsel advisor inside the company, so the demand is high and growing. AI impact, again drafting assisted. Then the frontier take an AI, this is something which is very much emerging and rising very very fast. जिसमें AI policy आता है, shaping government regulation. आप किसी NGO जो AI policy पे काम कर रहे हैं, governance पे काम कर रहे हैं, उनके साथ काम कर सकते हैं. You can write white paper and send it to the government. You can work with somebody who's writing white papers and sending suggestions and recommendations to the government about कि AI की laws कैसे होनी चाहिए. AI का impact core to the job, again AI governance core to the job. Cyber law, advising on breach and risk जितने भी है. Demand again rising fast. AI impact इसका भी core to the job है. Policy DPDP again rising fast, core to the job. बिजनेस ऑफ लॉ, इसमें लीगल ऑप्स आता है, रनिंग द बिजनेस साइड ऑफ लॉ, जैसे कि बिजनेस डेवलपमेंट हो गया, फर्म्स को क्लाइंट लाना हो गया, क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना हो गया. इसमें एआई इंपैक्ट बहुत हैवीली ऑगमेंटेड है. ठीक है. देन देयर इज प्रोडक्ट मैनेजमेंट, जिसमें बिल्डिंग सॉफ्टवेयर टूल्स फॉर लॉ. लीगल टेक कंपनीज में आप जॉब ले सकते हो, जिसकी सैलरी अराउंड 50-60,000 से स्टार्ट होती है. डिमांड बहुत ज्यादा इमर्जिंग है, बहुत ज्यादा. फॉरेन बेस्ड फर्म्स आपको यहाँ पे इंडिया में काम करवाते हैं, वर्क फ्रॉम होम देते हैं, पे यू रियली वेल. अगेन एआई इज हैवीली ऑगमेंटेड. कंप्लायंस के रूल्स है, इंश्योरिंग रेगुलेटरी एडहेरेंस. डिमांड हाई है, ग्रोइंग है. मॉनिटरिंग असिस्टेड के लिए एआई यूज होता है, टू मॉनिटर कि कंप्लायंस हो रहा है नहीं हो रहा है. देयर आर वेरियस एआई सॉफ्टवेयर्स दैट आर बीइंग बिल्ड. ईएसजी एडवाइजरी, जो एनवायरमेंटल सोशल रिस्क, जैसे कि आप बहुत बड़े एनजीओ के साथ काम कर सकते हो, एमएनसीज के साथ काम कर सकते हो, जस्ट फॉर ईएसजी. डिमांड इज वेरी वेरी राइजिंग. और जैसे जैसे पेड़ अपने देश में जिस स्पीड से कट हो रहा है, जिस स्पीड से पॉपुलेशन बढ़ रही है, एंड जिस स्पीड से गवर्नमेंट इज नॉट गिविंग अ क्रैप, तो उस हिसाब से ईएसजी एडवाइजरी समथिंग दैट इज ग्रोइंग वेरी फास्ट. पता नहीं फायदा होगा भी कि नहीं, बिकॉज गवर्नमेंट हैज टू लिसन and it's currently not been seeing listening to the advices कि ethanol is not good, but there is still scope when time changes. Again, it is research assisted. तो कल्चर एंड क्रिएटिव लॉ, एंटरटेनमेंट लॉ, जहाँ पे एआई का बहुत कम इम्पैक्ट है. इट इज अ स्टेडी नीश, कीप्स ग्रोइंग. बहुत सारे आजकल जैसे जैसे प्लेटफॉर्म्स, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स बन रहे हैं, बहुत छोटे छोटे वेब सीरीज बन रहे हैं, तो उस हिसाब से हर प्रोजेक्ट को एक एंटरटेनमेंट लॉयर की जरूरत है, और उतने एंटरटेनमेंट लॉयर इस देश में नहीं है. स्पोर्ट्स, अगेन जिस तेजी से स्पोर्ट इंडस्ट्री बढ़ रही है, जो ग्लैमर स्पोर्ट इंडस्ट्री को मिल रहा है, पहले फीमेल क्रिकेटर्स को, फीमेल स्पोर्ट्स को इतना मार्केटिंग नहीं होता था, आज वो हो रहा है. तो उसके लिए कुछ लॉज होते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. गेमिंग लॉ है, बहुत सारे इंडियंस
गेम्स डेवलप कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं. देन देयर इज स्पेस लॉ, जिसमें अगेन इट विल टेक टाइम फॉर इंडिया टू कोप अप, बट ग्लोबली बहुत ज्यादा स्कोप है. देन देयर इज वॉइस एंड वेंचर, जिसमें आप लीगल डिजाइन में काम कर सकते हो. यू कैन हेल्प ट्रेन द लीगल एआई, यू कैन हेल्प हैव अ लीगल डिजाइन. एआई इम्पैक्ट इसमें बहुत ज्यादा कोलैबोरेटिव है. लीगल जर्नलिज्म है, आप रिपोर्टिंग कर सकते हो लॉ और पॉलिसी के बारे में. यू कैन गो टू जंतर मंतर अभी एंड रिपोर्ट व्हाट इज हैपनिंग देयर इफ यू ऑफ कोर्स think it is right, personal opinions again. Then you can get into entrepreneurship, which is rising very fast, and AI impact core to job hai. I have built various projects through and with the help of AI. So अगर आप सही से यूज करो तो it can give you beautiful outcomes. Then we'll quickly move to section 8, which is where AI changes everything. अब टूल्स ये सारे आप ऑलरेडी आपके पास है. चैट जीपीटी है, क्लॉड है, परप्लेक्सिटी है, हार्वी है, नोटबुक एलएम है, कर्सर है. ये सारे प्लेटफॉर्म्स आप ऑलरेडी यूज कर रहे हो. यू ऑल जस्ट नीड टू नो एंड गेट ट्रेन्ड कि इनको कैसे यूज करना है. मेरा चैट जीपीटी और आप में से किसी का चैट जीपीटी अलग होगा. मेरे सवालों का जिस तरीके से वो जवाब देगा उस तरीके से आपके सवालों का जवाब ना दे, बिकॉज मे बी देयर इज अ ट्रेनिंग डिफरेंशिएटर दैट इज देयर. सो रिमेंबर दैट यू नीड टू ट्रेन योर एआई. Even though basic training उनकी हो गई होती है agents की, you'll have to train AI according to what you want it to do. Again, AI won't replace lawyers. ठीक है, ये जो आपको कितना भी कोई कुछ भी बोल दे, AI won't replace lawyers, but lawyers using AI will replace lawyers who don't. ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना, this is going to happen. Now what AI can't do for you, ठीक है, क्लाइंट ट्रस्ट तो नहीं कर सकता, वो जजमेंट अंडर अनसर्टेनिटी वो नहीं कर सकता. एक लाइव कोर्ट रूम में निगोशिएशन में परसूव करना वो चीज नहीं कर सकता. ठीक है, कितना भी आप रोबोट भी बना लो कल को, वो नहीं कर पाएगा वो चीज. ठीक है, फिर एथिकल रीजनिंग जो है उसको एथिक्स नहीं है तो वो नहीं दे पाओगे. जिस दिन एथिक्स उसको आ गए तो उसके दिन तो वो जिंदा हो जाएगा, कॉन्शियसनेस उसको गेन हो जाएगी, एंड देन हम रोबोट जैसे मूवी में जी रहे होंगे. ठीक है, दैट विल हैपन ऑफ कोर्स अकॉर्डिंग टू जॉफरी हिंटन, द गॉडफादर ऑफ एआई, बट इट विल टेक टाइम. ठीक है, सो तब तक अब हम सारे लोग सेफ है. ठीक है, सो देन रीडिंग अ रूम कि इस रूम में क्या है, लोग क्या है, कैसे उनके ह्यूमन बिहेवियर क्या है, उनके फेशियल एक्सप्रेशन से अंडरस्टैंड करना, ये सारी चीजें फिलहाल के लिए एआई नहीं कर सकता. बट अगेन फिलहाल के लिए नहीं कर सकता. ठीक है, देन सेक्शन 9, बिल्डिंग योर करियर स्टैक. नाउ स्टॉप थिंकिंग आई एम अ लॉयर, स्टार्ट थिंकिंग इन लेयर्स. ठीक है, कि मैं लॉयर हूं, डन. ठीक है, दिस इज योर बेसिक सिंगल लेयर आइडेंटिटी. उसके ऊपर यू हैव टू अटैच टैग्स, जैसे कि एआई फ्लुएंसी हो गया, पब्लिक स्पीकिंग हो गया, जैसे अनिरुद्ध ने कहा राइटिंग इज सेकंड डोमेन. तो राइटिंग इज अ स्टैक दैट यू विल ऐड टू अर्लियर दैट यू विल ऐड टू योर आइडेंटिटी. देन देयर इज नेटवर्किंग दैट इज देयर. ठीक है, 3 सैंपल स्टैक्स मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि लॉ, राइटिंग प्लस एआई फ्लुएंसी. अगर ये आप करते हो तो लीगल कंटेंट क्रिएशन में आप जा सकते हो, या फिर एआई असिस्टेड रिसर्च काउंसिल में जा सकते हो, या फिर यू कैन हेल्प those legal content creation brands that are there out there to get their content built, and they pay very well. ठीक है, then अगर law plus public speaking plus networking आपकी चीज है तो client facing जितने भी roles है वो आप सारे कर सकते हो. ठीक है, अगर आपका स्टैक लॉ प्लस बिजनेस प्लस डेटा है तो अगेन स्टार्टअप काउंसिल है, लीगल प्रोडक्ट मैनेजर है, ये सारी चीजें आप लीगल टेक में जा सकते हो. बट यू ऑल नीड टू हैव अ स्टैक. ठीक है, सिर्फ लॉ इज नॉट इनफ इन टुडेज वर्ल्ड. Then we have section 10, which is your 5-year blueprint. Okay, now this is something that you all will have to work on your workbook and your questions. Workbook will be shared to you on mail. By the time we end this session, you'll be getting it. Shubham sir, please make sure that they get the tools and the material that is made for them by the time the session is ended. If not, I'll be sharing it on the group as well. So no worries. Okay, so your degree gives you knowledge, your skills create opportunities, your personality shapes your journey, and your courage determines your destination. So the Sir, future belongs to people. Yes. sir, ask you a question. Actually, 2023 government of India passed the new laws in Bharatiya Nyaya Sahit, but this is law is not useful. Actually, crime is a daily is a rotating in the country. मतलब डेली बढ़ता जा रहा है. एक्चुअली अभी कुछ टाइम पहले हुआ था एक सेशन, उसमें भी मैंने ये बात रखी थी जो सर थे उन्हें, तो वो यही चीजें कह रहे थे कि लॉ तो चेंज हुआ है बट लेकिन उसके ऊपर डिपेंड करता है सामने वाले की इसकी मेंटालिटी कैसी है सोसाइटी के अंदर, तो Right, चीजें. right. So Ritesh, I'll tell you something. This is completely off the topic, but since we are all civilians and citizens of this country, and I feel it is my moral responsibility to answer this question. हम कितने भी लॉ बदल ले, लॉ बदलने से कुछ नहीं होगा. एनफोर्सिबिलिटी का जो एस्पेक्ट है, दैट इज मेजर पार्ट.
अकाउंटेबिलिटी और एनफोर्सेबिलिटी, फिलहाल हमारे देश में दो चीजों की कमी है। आप लॉ बदलो, आप पीएम बदलो, आप गवर्नमेंट बदलो, कुछ नहीं बदलेगा। दो चीजें जब तक नहीं बदलती, one is accountability, every person, not just the government, every person needs to be accountable as a citizen। मैं अगर कचरा फेंक रहा हूँ, I need to be accountable for it, and the accountability मेरी कौन हेल्ड करेगा? एनफोर्समेंट एजेंसी। एनफोर्सेबिलिटी एजेंसी कौन है? पुलिस हो गई, लोग हो गए, इवन आज से अगर मैं देख रहा हूँ किसी को कचरा फेंकते हुए, तो आई एम ऑल्सो एनफोर्सेबल एजेंसी, मैंने भी बोलना चाहिए कि मत फेंको वहां पे, है ना? तो जब तक ये दो चीजें नहीं चेंज होती, तब तक कितने भी लॉ बदल लो, सारे गलत ही रहेंगे। हाँ जी सर, एक्चुअली जैसे आप कह रहे हैं इसके लिए ना एक मतलब अलग से मतलब एक वो नहीं चाहिए, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन जैसे एनवायरनमेंट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो एनवायरनमेंट को फिर गंदा कितने ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, कितने ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे? इंसान को, सिटीजन्स को खुद भी अपने अंदर वो अकाउंटेबिलिटी, वो सिविक सेंस लाना पड़ेगा।